Hello everyone, welcome to my YouTube channel The English Speaker. In today's video we are going to learn about different type of specialist doctors, what we call them in English. So let's begin. Let's start with physician. Physician is our family doctor who treats common health problems like cough, cold, fever, etc. ENT specialist doctor. ENT means ear, nose, and throat. A doctor who treats ear, nose, and throat related problems that is called ENT doctor. For example, my mom was experiencing ear pain a couple of days ago, so she had to see an ENT doctor. आंखों से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं एंड दैट आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और चश्मा बनाने वाले व्यक्ति को कहते हैं ऑप्टिशियन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थोपेडिस्ट इसे हम ऑर्थोपेडिक भी कह सकते हैं. Orthopedics are the doctors who treats bone related problems. For example, if a person is having knee pain, then he needs to see the orthopedic. Next is neurologist. Neurologist is a doctor who treats brain related problems. Now let's move ahead. Cardiologist. Cardiologist is a doctor who treats heart problems. For example, if a person is having chest pain on the left, he should visit a cardiologist. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. पीडियाट्रिशियन. पीडियाट्रिशियन कहते हैं बच्चों के डॉक्टर को. पीडियाट्रिशियन को बच्चों का फिजिशियन भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक योर डॉटर इज स्ट्रगलिंग विद अ कफ. शी नीड्स टू सी अ पीडियाट्रिशियन. नेक्स्ट इज साइकाइट्रिस्ट. साइकाइट्रिस्ट होता है मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का इलाज करने वाला डॉक्टर, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन एक्सेट्रा. For example, Deepika Padukone accepted that she was going through depression and to come out of that, she took the help of a psychiatrist. Next is physiotherapist. A physiotherapist is a doctor who help us to improve our physical movements. Actually, they are the doctors who treats muscle related problems like stiffness, strain, body pain, etc. with the help of various techniques and exercises. For example, he strained his leg while exercising in the gym, so he had to see a physiotherapist. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेंटिस्ट. डेंटिस्ट कौन होता है ये तो आप सभी जानते होंगे. A dentist is a doctor who treats teeth and gum related problems. For example, for our good oral health, we should visit the dentist at regular intervals. Next is gynecologist. A gynecologist is a doctor who takes care of pregnant women. For example, she has an appointment with her gynecologist this evening. आज शाम का उसका अपने gynecologist के साथ appointment है. Next is dermatologist. A dermatologist is a doctor who treats skin, hair and nail related issues. For example, you must see a dermatologist to get rid of acne problem. Let's move on. Gastroenterologist. A gastroenterologist is a doctor who treats digestive system or stomach related problems like acidity, gas, heartburn, etc. They are the doctors who specialize in digestive system disorders. For example, your grandfather has been complaining about digestive system related issues for a long period of time. You must take him to a gastroenterologist. Next is radiologist. A doctor who interprets medical images like X-ray, CT scan, MRI is known as radiologist. आसान शब्दों में कहें तो रेडियोलॉजिस्ट वह डॉक्टर है जो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी रिपोर्ट्स को रीड करता है. फॉर एग्जाम्पल, हर एक्सरे रिपोर्ट इज परफेक्टली फाइन अकॉर्डिंग टू द रेडियोलॉजिस्ट. लेट्स मूव अहेड. Urologist. A urologist is a doctor who treats urinary tract related problems. दूसरे शब्दों में कहें तो किडनी या ब्लैडर से संबंधित किसी भी समस्या का ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु हैव किडनी रिलेटेड इश्यूज मस्ट सी अ यूरोलॉजिस्ट. हेमेटोलॉजिस्ट. हेमेटोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज सर्जन. सर्जन इज अ डॉक्टर हु डज ऑपरेशंस. सर्जरी या ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को इंग्लिश में सर्जन कहते हैं. For example, don't worry, a very experienced team of surgeons is operating on the patient. If you like the video, please like, share and subscribe.